Welcome you all to MedEasy channel. We are here for the gate through questions GTQ, that is 2024 industrial portion. I am Saurabh Pande, your faculty, taking that portion industrial, and we are going to see very good questions related to conceptual questions which can be asked in gate 2024. So see the first question that is from the PERT CPM. See, if you talk about the topics, what I feel PERT CPM, inventory and linear programming, they are very important. But this year if you talk about PERT CPM, and then after that linear programming, they are more important. Normally the questions from which they have asked from inventory, they are simple, straightforward, direct questions, normally direct formula based questions. So that's why I am covering few questions, mainly conceptual questions, which can be possible for the gate 2024. So see, first question, that is for a PERT activity, following data is given with time estimates: optimistic time, pessimistic time and most likely time. The time given are 2, 5 and 10 days. Then they are asking what is the probability of completing activity in most likely time. See, this is the most likely time. They want to find out the chances that our project will, activity will complete within 5 days. Now dear, we know that the total area, or you can say the total probability, cannot be more than 1. Means the total area, this total area that is covered up, that should be 1. So first of all, we will find out the total area, and then we have to find out the probability of completing activity by time 5 days. Means we have to cover up the shaded region up to 5 days. See, this area will exactly tell the probability. So first of all, we will find out total area. Now see, the base is here, base from here to here, that is of 8. 10 minus 2, it is 8. Now this is a, you can say, rectangle. So if the total area will be base is 8, height is 2x, x some unit they have given. Then this triangle, half into base into height, half base still is 8 and height is again 4x minus 2x is 2x. So the total area will be 16x plus 8x, that is 24x, and this total area will be equals to 1. Probability cannot be more than 1. So from here we can get x is 1 by 24. X is 1 by 24. From here what we get. Now see, with this area we need to find the probability of completing activity by 5 days. Now for this area, see, the space is 5 minus 2 is 3. See, shaded area 3 into 2x plus half base into height, half base is 3, height is 2x. Now this will be 6x plus 3x, that is 9x. Now the value of x, we know that x is 1 by 24. Put that value, that will be 9 into 1 by 24. On calculating, that gives the probability. To see, 9 divided by 24, 0.375. 0.375. So our answer will be 37.5%. That will be the probability. 37.5%, that will be probability of completing activity by most likely time. So do remember, concept is probability cannot be more than 1. The total area will be 1, and based upon that we computed out this area. Then next we'll move to the next question, again from PERT CPM. Very good question. For the activity shown, this is the activity given directly from the network diagram. Tail and head and tail events are given. J is the head event, this is tail event. Moving from I to J, and earliest and the latest time are given. Now for the activity shown below, the value of TF is for the total float, FF is for free float, and IF is for independent float. So see, first of all, we'll find out total float, free float and independent float for this activity. Now see, total float is given by, this is I, this is J, this is a head event, this is a tail event,
total float is given by Lj minus EI plus activity duration. So this is a J, Lj is 28 minus EI 8 plus 9. 9 plus 8 is 17, so that will be 11. Total float will be 11. Then free float. Free float is given by EJ minus EI plus activity duration. So see, EJ is 20 minus EI is 8 plus 9. So 20 minus 17, that will be 3. Then independent float. Independent float is given by EJ minus Li plus activity duration. See, EJ is 20 minus Li 13 plus activity duration 9. That is 20 minus 22 minus 2. Now simply we should put the values here. We have to put the value in the sense ki total float. See, we have to find out TF minus FF upon IF into 2. Total float is 11 minus free float is 3. Independent float is minus 2 into 2. See, 2 cancelled out, minus minus plus, so that will be 14. So our answer should be here 14. That will be our answer here for the question. So that will be our answer here. Answer will be 14. So do remember, these formulas are very, very important. Total, free, independent, and mainly directly from the network diagram for the gate point of view. So hopefully everybody got it. Then we should move to the next question. Next problem. Next problem again from PERT CPM. Good question. For the network diagram as shown below, the probability of completing project in 24 days is. We need to find out the probability of completing the project in 24 days. Now see, first of all, the network diagram is given, and then based upon that, standard, normal, variate and their individual probability are given. Now first of all, we should 3 time estimates are given. So we will find out the average time for each activity. Hopefully everyone knows how to find out the average time. Average time for an activity is given by A plus 4M plus B divided by 6. But do remember, wherever the gapping is proper, we can directly take M equals to TE, average time, और most likely time same आ जाएंगे अगर गैपिंग बराबर हो. देख रहे हैं जैसे यहाँ पे 3 plus 6 is 6 plus 3 9, 6 plus 3 9, तो 3 का गैप है तो अपन डायरेक्टली 6 ले लेंगे. यहाँ आप देखो 1 1 का गैप है ना, 5 to 6, 6 to 7, तो डायरेक्टली आप 6 ले सकते हैं. बाकी के लिए निकाल लेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल we should draw the, we'll find out the average time for each activity and we'll draw the network diagram based upon that. So here it will be 6 days, 2 days, 6, 4, 5, 6, so that will be 5, 7, 12, 23. You see 12, 7 plus 5, 12, 12 plus 5, 17,
and 17 plus 6, so means one data will add on increase, it will be directly 13. If you want to, you can find it out also. 1 2 3 2, 7 plus 2 9, 9 plus 2 11, so that will be 9, 4 plus 2 6, 6 plus 2 8, 6. Now we'll find out the project duration. Forward pass, maximum value 6 plus 6 12. For event 5, 12 plus 2 14 and 13 plus 2 15, the maximum is 15. Then 12 plus 9 21, 15 plus 6 21. Then taking equals to L for the last event, moving backward, 21 minus 6 is 15. For event 4, two options are there. See, 21 minus 9 is 12 and 15 minus 2 is 13. तो minimum select करना होता है, तो minimum is 12. फिर 3 के लिए दो options आ रहे हैं, 12 minus 5 7, इधर से 15 minus 13 2, तो minimum select करेंगे, minimum is 2. For event 1, two options, 6 minus 6 0, 2 minus 2 0. Both side it is 0. So see, the network diagram has exactly two critical paths here. One is this one and the other one. Now the network has two critical paths. The expected project completion time is 21 days. Schedule time they have given, in which we need to find out is probability, 24 days. Now we have to find out probability. But see, if there are more than one critical path, then in order to find out probability, we select the path having maximum standard deviation. Maximum standard deviation. तो अपन को क्या है ना, दोनों पाथ पे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा. एक पाथ है 1 2 4 6 और दूसरा है 1 3 5 6. Now sigma is given by, how we will find out sigma? Sigma is given by root of sum of variance along critical path. So, root of sum of variance along critical path. You see, two critical paths are there. The first one for path see, from here we'll find out 6 minus 3 here. Sigma, standard deviation sigma is given by b minus a upon 6. This is the formula for standard deviation sigma. So 9 minus 3 is 6. 6 by 6 square. Then 7 minus 5 is 2. 2 by 6 square. And 11 minus 7 is 4. 4 by 6 square. This comes out to be 1.2472.
Then for the other path 1 3 5 6, one, 3, 5, 6. 3, 1, 3, 5, 6. 3 minus 1 is 2. So 2 by 6 square. 13 minus 7. 16 by 6 square. Plus 8 minus 4 is 4 by 6 square. Comes out to be 2.76. So see, there are two critical paths. On both we find out the standard deviation. Now the maximum value is on the second path. That we should select to find out probability. तो अगर एक से ज्यादा क्रिटिकल पाथ होते हैं ना, तो हर पाथ पे अपन को अलग अलग सिग्मा निकालना पड़ता है, जिसके लिए मैक्सिमम होगा ना, दोनों पे एक्सपेक्टेड टाइम तो सेम आ रहा है, पर सिग्मा कैन बी डिफरेंट. Now sigma is more means uncertainty is more, that of course the chances of probability because of that will decrease. So always we select maximum standard deviation path. So sigma will select 2.7688. See, z is given by z 'We'll find out z, and based upon that we will get the solution. Ts is 24 minus 21 divided by sigma will take 2.8. Do remember maximum one, 2.7688. So that calculating out 24 minus 21 divided by 2.7688. 1.0835. 1.08. So see, as per table given 1.08, we have to select, that will be the z. Data is given, and hopefully everyone understand it. Maximum sigma we have taken. Now 86.1, 1.08 will be the value of standard normal variate, and based upon that our answer will be 86.1. C. See, the C will be our correct answer here. We should go with the option C, 86.1%. So 86.1%, that will be the probability that our project will complete by 24 days. So that will be your answer here for this question. So hopefully everyone got it, understand it. So if you do remember, if there are more than one critical path, for all the paths you have to find out sigma, and the maximum value that should be selected to find out probability. Next we'll move to the next question. Very good question from crashing. Normally lot of students, they find difficult to solve the question related to crashing. That's why I have made a very good question related to crashing. See, this is a question from crashing. The following table gives the activities in a construction project and all other relevant information. The normal cost and the crash cost are given for the activities, and then they are asking, if it is desired that the project must be completed in 13 days, then the total cost of the project will be. So see, we have to find out what will be the total cost when the project is crashed up to 13 days. And the indirect cost varies based upon the number of days. Means about 17 days, 2,500, then 16, 2,350. So this way they have given the indirect cost. So see, so first of all, we have to draw here network diagram. We'll draw the network diagram, and based upon that network diagram, we'll find out all the calculations, computations.
And first of all, before that, we should draw the network diagram, and we'll find out see data are given. A, B and C, that doesn't require anyone. There is no need of any activity before A, B and C. A, B and C. Then D is after B. D after B. E is after B. And F after A and D. And G after C and E. See, this is the network diagram given, data given for the network diagram. Then numbering, let 1, 2, 3, 4, 5, numbering of events. Then see that based upon the normal working condition, we'll put their time values. 6, 4, 8, 3, 6, 5, 7. Next, we have to find out the project duration, forward and backward pass computation. 0, 4, 7, 4 plus 6, 10, and 0 plus 8, 8. The maximum value is 10. 7 plus 5, 12. 10 plus 7, 17. The maximum is 17. Then backward, 17 minus 7, 10. 17 minus 5, then for two options, 10 minus 6, 4, and 3 options, 4 minus 4, 0, 10 minus 8, 2, the minimum is 0. See, that will be our critical path. So see, based upon normal working condition, the project duration is of 17 days. Now, no need to find out the cost at 17 days because they are only asking must be then the total cost of project at 13 days. So directly, first of all, we'll find out the cost slope without wasting out time. We'll make one column for delta C upon delta T, cost slope for each activity. And hopefully everyone understand cost slope. See, 1200 minus 800 divided by 600, 6 minus 4. So see, 400 divided by 2, that will be 200. Now, hopefully everyone understand what I mean by cost slope. See, 800 minus 700 divided by 1, 100. Then 225 divided by 3, so that will be 75.
600 minus 500, 100 divided by 1. 1000 minus 900, 100 divided by 2 is 50. Then 200 divided by 2, 100, and 70. Those are the cost slope. Then we'll take the sum of these, that will give the total normal cost. Their summation, that will give the total cost. So we'll take the sum of these all. So that comes out to be 5,700. Total normal cost, and the sum of all these, that will be 5,700. Indirect cost varies depending upon the duration. Now see, first of all, we have to crash activity having minimum cost slope. So 3 activities are there on the critical path B, E and G. B, E and G. See, B, E and G. So of course, the minimum cost slope is for E, so we should crash activity E. Now see, first of all, we should understand the concept of crashing. You can check how many paths are there from the first event to the last event. So you can check it out. There are 4 paths. One is 1, 3, 5. See, 1, 3, 5. Then second path is on this 1, 3, 5 time is 6 plus 5, 11 days. The second path is 1, 2, 3, 5. You should understand the concept. Time will be 4 plus 3, 7, 7 plus 5, 12 days. Third path is 1, 2, 4, 5. Four plus 6, 10, 10 plus 7, 17 days. Then the last one, 1, 4, 5. Eight plus 7, 15 days. See the maximum time consuming path, that is our critical path also. Now see, if we crash, minimum cost slope activity is A. Now maximum we can compensate by 2 days. So see, first of all, if we crash E by 2 days. I am going to crash E by 2 days. So we will change it from 6 to 4 days. Now see, if we change only E by 2 days, this will be the same. 6 plus 5, 11. Still 11 days. Understand? No changes in this path also. 4 plus 3, 7. 7 plus 5, 12 days. Still it will be 12 days. Now 4 plus 4, 8 plus 7, that will become of 15 days. And this path 8 plus 7, 15 days. See, this will be our first crashing. After first crashing, now there will be 2 critical paths. This is first crashing. There will be 2 critical paths. This will be also now critical path. Project will be of 15 days, but we have to move up to 13 days. Now after that, again we have the option now. Now again we have to crash. See, but E cannot be crashed now. E is already at the minimum point. Crash point पे आ गया है, तो E को और अपन further crash नहीं कर सकते. अब अगर आपको क्रैश करना है तो क्या ऑप्शन है? अब यहां पे देख रहे हैं पैरेलल क्रिटिकल पाथ है, तो E, B और C को साथ में क्रैश करना पड़ेगा, पर B को भी अपन एक दिन से ज्यादा क्रैश कर ही नहीं सकते मैक्सिमम. तो पहला ऑप्शन है, अगर अपन को कम करना है 15 से, तो एक पहला ऑप्शन हो सकता है कि B और C को साथ में क्रैश करें, पर सबसे आसान तरीका होगा कि अपन G को क्रैश कर सकते हैं. देख रहे हैं G को, और G को आप 3 डेज से क्रैश कर सकते हो, पर अपन को 13 तक ले जाना है तो अपन सिर्फ 2 दिन से क्रैश करेंगे. तो सी
will crash G by 2 days. G को अगर अपन 2 दिन से क्रैश कर दें तो नाउ इट विल बी फ्रॉम 7 to 5 days. So see, this will be still 11. 6 plus 5 11, no problem. ये वाला पार्ट भी 4 plus 3 7, 7 plus 5 12 days का ही रहेगा. ये देखिए 4 plus 4 8, 8 plus 5 13 हो गया ये वाला पार्ट. ये भी 8 plus 5 13 days का हो गया. So now our project will decrease to 13 days, what we wanted. आ गया 13 days पे. So project duration will be now of 13 days. We have moved to 13 days. ये बाकी लूज बदल गई है पर उसकी जरूरत नहीं. ऑब्जेक्टिव में है अपन जल्दी से फास्ट सॉल्यूशन निकालना है. 13 डेज तक पे लेके आ गए. अब देखिए टोटल कॉस्ट निकालने जल्दी से क्या आ जाएगी. टोटल कॉस्ट दैट विल बी द सम ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट. डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट. इनडायरेक्ट कॉस्ट तो अपन को 13 डेज की यहां से मिली जाएगी. ये आ गई इनडायरेक्ट कॉस्ट. डायरेक्ट कॉस्ट निकालने. डायरेक्ट कॉस्ट विल बी, सी ऑलरेडी इट वाज 5700 नॉर्मल वर्किंग में जो थी वो तो थी ही. 5700 already it was. Now first of all we crashed activity E by 2 days and by crashing by 1 day the expenditure was 50. So how much increase will be there in direct cost? 50 into 2, 100 rupees. फिर अपन ने G को क्रैश किया 2 दिन से. क्रैश एक दिन से करने के 70 थे और अपन ने 2 दिन से क्रैश कर दिया तो 70 into 2 ये भी बढ़ गई. तो how much increase will be there? 5940. Now that will be the direct cost. The total cost will be sum of direct cost 5940 plus when the project is of 13 days indirect cost is 1850. Their summation will be 7790. See, that will be our answer here, 7790. So that will be our answer. Hopefully you are able to understand the concept of crashing. और याद रखना है, in case of objective questions ना, just in order to save out the time, we can directly crash on the network diagram only. ना डायरेक्टली अपन यहीं पे नेटवर्क डायग्राम पे क्रैश करते जाएंगे जिससे अपन टाइम बचा पाए. है ना, स्पीड बढ़ा के रखना पड़ेगा, अदरवाइज ये क्वेश्चंस लेंदी होते हैं, यू कैन मिस आउट. है ना, आपसे छूट भी सकता है. तो डू टेक केयर ऑफ दैट. यू हैव टू मेक स्पीड अप द प्रोसीजर. कहीं गलती से छूट ना जाए. क्वेश्चंस को थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के रखना है. चलिए नेक्स्ट विल सी अ वेरी गुड क्वेश्चन फ्रॉम आवर graphical now. The question from graphical. I have taken few questions from the graphical just to help you to understand the concept well. वैसे graphical easy लगता है बच्चों को, पर graphical में बहुत गलतियां करते हैं बच्चे. है ना, लगता तो है बच्चों को कि आसान है, graphical से questions easily बन जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, but normally what I have seen कि lot of mistakes students make from this portion graphical. तो चलिए first of all we'll see a question. Looks like to be very simple. The optimum value of decision variable x1 and x2 for the following linear programming problem is maximization problem. Maximize z 6x1 minus 2x2 subject to constraints. Constraints are given 8x1 minus 4x2 less than equals to 8. x1 is less than 3 but greater than equals to 0 and x2 greater than equals to 0. So first of all we know everyone we have to plot out the graph. So first of all we'll plot the lines.
अपने अप टू स्केल प्लॉट करेंगे, अदरवाइज गलतियां हो सकती हैं बच्चों से जल्दी जल्दी में। No, see, first of all, the constant x1 less than equals to 3. So this will be the line 3. Next one will be less than equals to 3. Then x2 greater than equals to 0. This constraint we will equate it. See, 8x1 minus 4x2 equals to 8. इक्वल कर दिया. Then x1 दोनों तरफ 8 से डिवाइड किया तो x1 अपॉन 1 प्लस x2 अपॉन ना बेटर है हमेशा इसको इस तरह फॉर्म में लेंगे तो 8 डिवाइडेड बाई -4 -2 इक्वल्स टू 1. यूनिटी के फॉर्म में लेके आएंगे तो सी where x2 is 0 x1 will be 1. ये आ गया 1. And when x1 is 0 x2 is -2. So see this line is 8x1 minus 4x2 equals to 8 line. Now summation of this variable should be less than equals to means towards origin. तो अपन origin की तरफ साइन देंगे इस तरह से. So see the feasible region will be our, see this will be our feasible region and that goes up to infinite. ये देखें लाइन ऐसी जाएगी तो ये इनफाइनाइट तक जाएगा. कॉर्नर पॉइंट जो आ रहा है वो एक ही आ रहा है और एक ही आ रहा है. लेट दिस इज ए पॉइंट जो है दैट इज 1, 0. दिस इज बी पॉइंट. x1 is 3 here. Now when x1 is 3 x2 will be x1 3. Four, 3, comma 3, 4. Yeah, 4 it should be. तो सी अगर अपन डायरेक्टली क्वेश्चंस देखें तो ऐसा लगता है कि ये अनबाउंडेड है बिकॉज नॉट बाउंडेड बाय द लिमिट ऑन द कंस्ट्रेंट. और ध्यान से देखिए क्वेश्चन है मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम का और यहाँ पे क्या है ना x1 मैक्सिमम वैल्यू विल बी 3. इधर तरफ देख रहे हैं x1 नहीं बढ़ेगा सिर्फ x2 बढ़ेगा. अच्छा जैसे जैसे x2 बढ़ेगा इसका मैग्नीट्यूड बढ़ेगा मतलब इसकी वैल्यू कम होती जाएगी. तो मैक्सिमम वैल्यू आपको कहाँ मिल सकती है अंदर ही की तरफ. बाहर की तरफ तो और मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा ना जैसे अपन बाहर की तरफ जाएंगे. सी x1 विल रिमेन कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट रहेगा. x2 मैग्नीट्यूड विल कीप ऑन इंक्रीजिंग और x2 का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा मतलब z की वैल्यू कम होती चली जाएगी. तो यहाँ पे अनबाउंडेड सॉल्यूशन नहीं आएगा, यहाँ सॉल्यूशन आ जाएगा. सॉल्यूशन कहाँ पे आ जाएगा जहां पे मैक्सिमम. तो देखिए 2 पॉइंट्स हैं तो z एट a देख लीजिए. a पे क्या आएगा 6 एंड z एट b 6, 3, 18 माइनस
8, 10. See, maximum value will be at point B. So B will be our answer here. Maximum value we can get at point B. याद रखना ये अनबाउंडेड सॉल्यूशन नहीं है. कई बच्चे जल्दी जल्दी में ना गलतियां करते हैं, उनको लगता है अनबाउंडेड सॉल्यूशन. याद रखना है यहाँ पे जैसे से x1 तो फिक्स रहेगा, मैक्सिमम वैल्यू 3 हो सकती है, उससे ऊपर हो नहीं सकती. बट एज x2 विल इंक्रीज, दिस ऑब्जेक्टिव फंक्शन शुड कीप ऑन डिक्रीजिंग. तो मैक्सिमम वैल्यू विल बी पॉसिबल एट पॉइंट B. दैट विल बी आवर आंसर. तो दैट इज 3 and 4. तो मीन्स वी शुड गो विद द ऑप्शन D हियर. तो x1 3, x2 4, that will be our optimum solution, and the maximum value at that point will be 10 units. The next, hopefully everyone got it. Clear है? चलिए आगे बढ़ते हैं. एक बढ़िया क्वेश्चन और है आगे जो अपन को देखना है. ये क्वेश्चन है अगेन फ्रॉम द लीनियर प्रोग्रामिंग. डू रिमेंबर, इफ यू टॉक अबाउट LP, ग्राफिकल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. आप देखेंगे भी सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो आए हुए हैं वो ग्राफिकल से ही आए हुए हैं. तो हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू कैन गेट फ्रॉम ग्राफिकल ओनली. उसी में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हुए हैं और इम्पॉर्टेंट भी है क्वेश्चन, क्योंकि बच्चों को लगता तो है इजी है, पर नॉर्मली बच्चे जल्दी जल्दी में गलतियां करते हैं. सो यू विल सी दिस क्वेश्चन फ्रॉम नेक्स्ट अगेन फ्रॉम द ग्राफिकल. नो इन दिस क्वेश्चन अगेन इट इज मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम. विद द कंस्ट्रेंट्स आर गिवन, कंडीशंस आर गिवन, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द ऑप्टिमम वैल्यू फॉर द अवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन. चलिए कंस्टेंट्स को प्लॉट करें यहाँ पे. फर्स्ट ऑफ ऑल just to get up more space. So see the first constant x1 plus x2 less than equals to 100. इसको इक्वल टू में बदलेंगे. See here 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 and 100. Let this say x is for x1. Similarly, now see, so first of all x1 plus x2 less than equals to 100. तो see when x1 is 0, x2 will be 100. तो पहला पॉइंट तो याद आएगा, अपन को दो पॉइंट मिल जाएंगे, एक इधर और एक इधर, एंड वी शुड ज्वाइन देम, कनेक्ट देम बाय अ लाइन. That will be our first constraint. See, that is our first constraint. फिर सेकेंड कंस्टेंट है x1 less than equals to 75. सेकेंड कंस्टेंट प्लॉट करेंगे.
So 75 will be somewhere here. Use second constant. Third constant x2 less than equals to 75. This will be 75 here. Then the fourth constant minus 2x1 plus 3x2, इसको ना इक्वल टू में बदलेंगे, इक्वल्स टू 0, इक्वल टू बदला और इसको चेंज करेंगे तो क्या आएगा, x1 इक्वल्स टू पॉजिटिव हो जाएगा 3/2 टाइम्स ऑफ x2. इसको प्लॉट करेंगे, दिस इज पासिंग थ्रू ओरिजिन बिकॉज 0 इट इज, it should be passing through origin. Now see, while plotting them ना lot of time students get confused कि भाई इसको प्लॉट कैसे करेंगे. एक पॉइंट तो 0 आ गया ओरिजिन पे, यहाँ पे आ जाएगा. Let origin here. अब दूसरे प्लॉट के लिए क्या करेंगे. Now see, when x2 is 10 or you can say you take 20. अब अगर अपन x2 20 रखेंगे तो when at x2 20 तो x1 will be 30. तो बस एक पॉइंट मिल गया. In order to explain, you help you, that will be at the intersection here. Understand? ये पॉइंट आ जाएगा. समझाने के लिए बनाया था, जरूरत नहीं था इसका. ठीक है. ये पॉइंट यहाँ आ रहा है और now we should connect them by a line. Now see, this line is this one, minus 2x1 plus 3x2 equals to 0. But the summation is less than equals to 0. Now x1 3/2 should be less than equals to 0. So where it should be? If you see, we can check it out from here. The value of this value should be less than, means x1 should be less than, means it should be inner side, अंदर की तरफ आएगा. ये वाला नीचे की तरफ आएगा ये कांस्टेंट. So this is the fourth constant. Then the fifth constant minus 2x1 plus 8x2 greater than equals to 0. इसको इक्वल टू बदलेंगे. That is the fifth constant. और यहाँ से अपन को मिलेगा x1 equals to 4 times x2. Now see, when again passing through origin, starting में तो ये वही आएगा. Starting point will be this one, origin. अब now when x2 is x2 I have made mistake, sorry. यहाँ पे ध्यान रखना है, x2 equals to 20 जब था,
ये x2 नहीं था, मैंने गलती से इधर ले लिया था 20. जब x2 20 होगा मतलब इधर वाला, तो x1 शुड बी 30. तो ये पॉइंट थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है. लेट मी करेक्ट इट, जस्ट वेट. गलती से ये देखिए, when at x2 equals to 20, तो x1 equals to 30. ध्यान रखिए 20 इधर का लेना है, तो ये 30. तो दिस पॉइंट विल बी समवेयर हियर, यहाँ पे आएगा. So this will be our fourth constraint, and the area will be this one. And ये आएगा fourth constraint. Correct your mistake. Then here side, this side, fifth one, minus 2x1 plus 8x2 equals to 0. Fifth constant equal to बदला, तो x1 will be 4 times x2. Now when at x2 equals to 10, x1 equals to 40. So see, ये वाला पॉइंट आएगा. इस तरह का पॉइंट आएगा. अब इस बार जो है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो ये इस तरह बाहर की तरफ. एंड द feasible region, common region will be this one, common to all. That will be our feasible region. Now objective function is for maximization. So see corner points are, of course this is origin, O 0, 0. One is this point and this one. So see A point is 60, 40. B point 75, 25. C point 75, 18.75. Now we'll put the values of the corner point in the objective function to see z at A. $60 plus 80. 140. Z at B. $75 plus 50, so 125 it should be, and Z at C, 75 plus that will be 112.5.
see the maximum value we are getting at point A. The point A, that will give our final optimum solution. This point is giving the maximum value, and the maximum value is 140140. So that will be our answer here for the question. And do remember the constants. While plotting the constants, we have to take care. For the linear programming problem, optimum value of the objective function 140, and that will be our solution here. For those who, that will be the complete solution here for the question. So do remember, while plotting the constants, even I made mistake. That correction was done, क्योंकि जल्दी में गलतियां होती हैं, किसी से भी गलती हो सकती है, ध्यान रखिएगा। कोशिश ये करिएगा कि जब भी क्वेश्चंस बना रहे हैं तो बी अलर्ट, थोड़ा सा टाइम फोकस के साथ देना है। जल्दी में गलतियां इनमें हैं, बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं, बट नॉर्मली लॉट ऑफ पीपल्स यूज टू डू दैट, तो डू टेक केयर ऑफ दैट। Next, we'll move to the next question. Again from linear programming. Again looks like to be easy question, and even sometimes here also the students make mistake while solving this type of question. They do make mistake. Now the question is minimization in a linear programming problem is given below. Minimization, the objective function is for minimization. Minimize z, 9x1 minus 4x2, subject to the constants. Constants are given, and we need to find out the optimum solution. 4 options are given. Now see, first of all we'll plot out the constants. पर इस तरह के कंस्टेंट्स में ना थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ देख रहे हैं रिसोर्स वैल्यू नेगेटिव है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल मल्टीप्लाई माइनस ऑन बोथ साइड सो दैट इट कन्वर्ट टू पॉजिटिव। रिसोर्स वैल्यू को ना, इसको रिसोर्स वैल्यू कहते हैं, इसको हमेशा पॉजिटिव रखना है। तो आप कोशिश करिए कि जब भी रिसोर्स वैल्यू दी है ना, इट शुड बी पॉजिटिव। रिसोर्स वैल्यू शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव। अगर नेगेटिव है तो उसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट इट कन्वर्ट टू पॉजिटिव। सी माइनस मल्टीप्लाई किया तो दैट विल बी 2x1 माइनस x2, साइन बदल जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। फिर इक्वल टू साइन में बदलेंगे, 2x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 4, डिवाइडिंग बाई 4 बोथ साइड सो दैट रिसोर्स वैल्यू कन्वर्ट टू यूनिटी। तो x1 अपॉन 2 प्लस x2 अपॉन -4 इक्वल्स टू 1। ये पहला कंस्टेंट आ जाएगा।
इज द फर्स्ट कंस्टेंट. x1 पे लेंगे 0.2 और x2 पे लेंगे -4 and join it, combine them by a straight line. Now the summation of variable is greater than equals to. Greater than equals to means it should be away from origin. Origin से दूर जाता हुआ. So that should be away from the origin. Then the second one, second equation, 3x1 minus 2x2 equals to 12. Dividing both sides by 12, x1 upon 4 plus x2 upon -6 equals to 1. x1 पे लेंगे 0.4 और x2 पे लेंगे -6. तो see we should increase this scale. फोर एंड x2 पे लेंगे -6. ये आएगा -6 यहाँ पे. एंड नाउ वी शुड ज्वाइन देम, कंबाइन देम बाय अ लाइन. Now here the summation is less than, so it should be towards origin. But see the condition is x1, x2 both should be greater than equals to 0, so we have to take the positive value only. So the feasible region will be this one upper, and that will go up to infinite. इसी तरह बढ़ता जाएगा, that will go up to infinite. But the problem is for minimization. The minimum point will be at the inner boundary. That this is point A to 0. This is point B 4,0. So we are getting 2 points 2,0 and 4,0. तो मिनिमम पॉइंट जो है ना हमेशा इनर बाउंड्री पे होते हैं. तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ z in objective function, z at A 18, z at B 36. The minimum value will be 18 and that will be 2,0, huh? So that will be C will be our correct answer here, and the minimum value will be 18. So hopefully everyone understand the concept. Do remember, whenever it is resource value given negative, better convert into positive, and then converting in this form also ना, take it like this one, so that will be easy है ना. पॉजिटिव ले लें जिससे कि आपको पता हो कि हाँ x2 पे -4 लेना है, तो ये आसान रहेगा. साथ में ये कंडीशन है अगर कंस्टेंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, अवे फ्रॉम ओरिजिन. अवे फ्रॉम ओरिजिन नहीं, ओरिजिन है ना, इससे दूर जाता हुआ. अगर कंस्टेंट जो है लेस देन इक्वल्स टू है, टूवर्ड्स ओरिजिन. लेस देन टूवर्ड्स ओरिजिन, so that will make things easier to understand. So hopefully everyone got it correctly.
The next we'll see the next question, next problem. That is from the simplex. Lot of times students find simplex problem a little bit difficult, complicated. That's why I picked up question from simplex. For a linear programming problem, objective function is maximize z 8x1 plus 5x2 plus 10x3 objective function, and at a stage simplex table is as given below. In the next step of optimality, the increase in the current solution will be. We have to find out in the next step how much increase will be there. So this is the question problem given, and in the next step they are asking how much increase will be there. So see, first of all, the same simplex table we have to perform optimality, and for optimality what we have to do, we have to first of all replacement ratio column x3 profit quotient. We will make one column for EI. Now whatever the variables are in the basis, their profit quotient are kept here. X1 profit quotient is 8, S2 is will be of course 0, slack variable, and for x3 it is 10. Then profit coefficient row, CJ row, I am making after that only, so that CJ profit quotient row, profit quotient x1 profit quotient is 8, that will be here, x2 is 5, x3 is 10, s1 s2 s3 slack variables 0. Then zj row, summation ei aij. See ei, these are the aij technological coefficients. So 0 into 10, 0, 0 into 0, 188, 8 it will be. Then 1 by 2 into 10 is 5, and 5 minus 2, it will be 3. 3 here, 1 to 10, minus 10 into minus 1 by 3, 0, so that will come out to be 4 by 6. That will be 0. And for S3, $50 by 2. How much should be 50 by 2? Minus 8 by 2. Divided by 2, 21. Then delta J row, the very important one, delta J row, we call it net evaluation row. Cj minus Zj, Cj profit quotient minus Zj, 0, 5 minus 3 is 2, 10 minus 10, 0, minus 4 by 6, 0, minus 21. Now see this value, this row is very important. Always here the delta J value should be 0 for the variables in the basis. You can see x3 0, s2 it is 0, and for x1 also 0. And if there is positive value, means that tells the increase possible. So here still there is one positive values. For maximization problem, if all the values are either negative or 0, means the current solution is optimum. तो याद रखना है, अगर मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है और इस रो में सारी की सारी वैल्यू नेगेटिव या 0 आ गई, मतलब आपका करंट सॉल्यूशन ऑप्टिमम आ गया, पर यहाँ पे एक भी पॉजिटिव वैल्यू है, मींस करंट सॉल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमम. तो हियर द सी देयर इज स्टिल वन पॉजिटिव वैल्यू, मींस द करंट सॉल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमम. Still we can increase here. The
highest positive value we have to select. The column is termed as key column and the variable in the column head is termed as incoming variable. So see, x2 is our incoming variable, means in the next step it will come into our solution space. यहाँ पे आएगा और इसमें से कोई एक यहाँ से बाहर जाएगा. The variable which will go out of the basis, that is termed as outgoing variable. The variable which will come, that is termed as incoming variable. Now which will be the outgoing variable? For that we'll make replacement ratio column. BI values divided by corresponding elements of key column. अभी अपन ने की कॉलम जो सेलेक्ट किया ना, उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से डिवाइड कर दीजिए BI वैल्यूज को. ये देख रहे हैं BI वैल्यूज जो करंट सॉल्यूशन है इसमें डिवाइड करेंगे. इसको कहते हैं रिप्लेसमेंट रेशियो कॉलम BI डिवाइडेड बाय AIJ. सी 8 डिवाइडेड बाय 1/2, 16, then 3 divided by 3/2. It will be 2 and 5 divided by -1/4. So that will be -20. अब इसमें अपन हमेशा सेलेक्ट करते हैं मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू. तो मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू इज 2 and the selected row is termed as key row. Key row. And exactly now S2 is outgoing variable. ये यहाँ से outgoing variable हो जाएगा and will be replaced by our incoming variable. Our incoming variable X2. यहाँ X2 आएगा और इसकी जगह outgoing variable जाएगा. And the element at the intersection point of key column and key row is termed as key element. तो see 3/2 will be our key element. ये key element होगा. पर द क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछ रहा है कि अगले स्टेप में कितने रुपए से इंक्रीज आएगा, जो अपन यहीं से पता कर सकते हैं. तो सी बाय ब्रिंगिंग 1 unit of x2, 2 rupee increase, 2 units increase will be there, and maximum we are able to bring 2 units. So 2 into 2, 4 units increase will be there. So very simple, from here directly we can get the answer, that is 4 units. That will be our answer, that is option A. तो ध्यान रखना है, ये वैल्यूज क्या बताती हैं? The variable in the column head, if we bring into the current solution, how much increase will be there because of bringing 1 unit. And see, whatever the value you select here, in the next step you will find out this will be the value of your incoming variable. अगले स्टेप आप देखोगे x2 की वैल्यू 2 यूनिट्स आने वाली है. तो 1 यूनिट के कारण 2 यूनिट्स का इंक्रीज था और अपन मैक्सिमम 2 यूनिट्स लेके आ रहे हैं, तो 2 into 2, 4 यूनिट्स का इंक्रीज होने वाला है. तो डायरेक्टली नो नीड टू प्रोसीड एनी फर्दर, वी कैन गो विद द ऑप्शन ए. 4 units increase will be there in the next step. So in the next step our objective function will increase by 4 unit. So that will be our answer here for this question. Understand? So do remember this simplex table. This is very important. Lot of times students find it difficult to solve out the questions related to simplex. But if you understand the table, very simple, easy questions you can click from here. Hopefully clear to everyone. The next one question from a transportation problem. A transportation problem, a company producing a product at 3 factories, F1, F2 and F3, and the same product has demand at 4 destinations, D1, D2, D3 and D4. The data is given, the cost values are given in rupees in the matrix below. Using Vogel's approximation method, find the initial solution and choose the correct option. So this is MSQ, multiple select question. So first of all, we have to solve it by Vogel's approximation method and then we'll get the solution here. So see, first of all, we have to check whether the problem is balanced or unbalanced. So see, $190. The first step is always we should check whether the problem is balanced or unbalanced. Supply is 190 and the demand is 220. So see, the demand is more and the supply is less. The problem is unbalanced. 30 units shortage is there, supply shortage is there. So we'll first of all balance it. We will balance it. एक फैक्ट्री लगाएंगे जिसमें से अपन 30 यूनिट्स की सप्लाई दिखाएंगे. तो we'll first of all balance it. See, I have made a little bit bigger matrix.
dummy factory let F4. So the cost value for the dummy will be 0. डमी के लिए हमेशा कॉस्ट 0 आती है, तो विल टेक कॉस्ट वैल्यू 0. $60, $50, $80, डमी के लिए 30 यूनिट्स. See, now this is our balanced transportation problem, and now we should perform Vogel's approximation here for this question. इस पे लगाएंगे Vogel's approximation. अब देखिए Vogel's approximation में क्या करना है. We have to take first of all the difference between the smallest and second smallest element in each row and each column. है ना, हर रो हर कॉलम में डिफरेंस लेते हैं स्मॉलेस्ट एंड सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट के बीच में. So we'll take the difference between the smallest and second smallest element in each row and each column and write them below the respective row and column. So see 0 and 24, 0 18, 18, 0 20, 20, 0 16, 16. फर्स्ट रो में देखेंगे 16 22, 6, then 18 22, smallest and second smallest, 18 22 and 0. तो अपन ने क्या किया, हर रो हर कॉलम में डिफरेंस देखा स्मॉलेस्ट और सेकंड स्मॉलेस्ट के बीच में, और इसी को उसी रो उसी कॉलम में लिखते चले गए. So we have taken the difference between smallest and second smallest element in each row, each column, and write them below the respective row and column. Now we have to select the highest individual difference. जो highest value होगी ना differences में, वो include करनी है. सबसे पहले highest जो value आ रही होगी differences में, वो select करनी है. You see the highest value we are getting is 24. The highest difference is 24. इसको select करेंगे. अब इसमें देखेंगे minimum cost cell. Minimum cost cell is 0. Maximum possible allocation, how many? 30 units allocated here. 40 minus 30 is 10, 30 minus 30 0. अब आप देख रहे हो फोर्थ रो की रिक्वायरमेंट 0 हो गई. The row or column whose requirement becomes 0, we should cut it off, we should strike it off so that it cannot be considered again. तो इसको इस तरह से स्ट्राइक ऑफ कर देंगे. फिर से देखेंगे डिफरेंस स्मॉलेस्ट और सेकंड स्मॉलेस्ट के बीच में, हर रो हर कॉलम में. 24, 28, 4, 18, 4, 20, 28, 8, and 16, 18, 2, 6, 2, 2. Now the highest value is 8. सबसे हाईएस्ट वैल्यू सेकंड टाइम में मिल रही 8. इसको सेलेक्ट करेंगे. इसमें देखेंगे मिनिमम कॉस्ट सेल 20, मैक्सिमम पॉसिबल 50, 50 यूनिट्स एलोकेटेड हियर. 10, 0. Now the second row requirement becomes 0, we should cut it off. The second row की requirement 0 हो गई. Cut it off.
Clear? Again take the difference between smallest and second smallest in each row, each column. हर रो हर कॉलम में डिफरेंस लेंगे स्मॉलेस्ट और सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट के बीच में. 28 32 18 22 4 28 34 it is 6 now. 16 24 here 6 and 2 है ना. इनकी याद रखिए रिक्वायरमेंट 0 हो चुकी है तो इनको क्लोज कर देना है. यहाँ पे अभी भी 2. अब हाईएस्ट वैल्यू सेलेक्ट करेंगे. नाउ सी वी आर गेटिंग 2 हाईएस्ट वैल्यू. 6 6. अब अगर हाईएस्ट वैल्यू सेम मिल जाती है ना तो सेकंड प्रेफरेंस देते हैं मिनिमम कॉस्ट सेल को. तो यहाँ पे देखेंगे तो मिनिमम कॉस्ट सेल क्या मिल रहा है 28 और इधर देखेंगे तो मिनिमम कॉस्ट सेल क्या है 16. तो वी शुड गिव फर्स्ट प्रेफरेंस टू 16. इस वाले को सिलेक्ट करेंगे. तो अगर कॉस्ट वैल्यू सेम फंस गई ना जैसे 6 6 था तो अपन ने मिनिमम कॉस्ट सेल को प्रेफरेंस दिया. हाउ मेनी मैक्सिमम पॉसिबल हियर 50 यूनिट्स एलोकेटेड हियर 0 10. नाउ द कॉलम रिक्वायरमेंट बिकम 0 तो वी शुड कट इट ऑफ. कॉलम को स्ट्राइक ऑफ कर दिया. अब अपनी प्रॉब्लम में ना सिर्फ 2 रो बची हैं और 3 कॉलम बचे हुए हैं. अगेन वी हैव टू टेक द डिफरेंस स्मॉलेस्ट एंड सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन ईच रो ईच कॉलम. फिर से डिफरेंस लेंगे स्मॉलेस्ट और सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट के बीच में हर रो हर कॉलम में. (28 32 4 6. Here requirement is 0. This column requirement fulfilled. Now 22 28 6. Then 18 and 28 10. अब फिर सेलेक्ट करेंगे हाईएस्ट वैल्यू. नाउ द हाईएस्ट वैल्यू इज 10. इसको सेलेक्ट किया. इसमें देखेंगे रो में देखेंगे मिनिमम कॉस्ट सेल 18, मैक्सिमम पॉसिबल 70 यूनिट्स एलोकेटेड 0 10. नाउ कॉलम रिक्वायरमेंट बिकम 0. सेकेंड कॉलम को कट कर देंगे. Now the problem has 2 column, 2 row left out. Again difference between smallest and second smallest element, every row, every column. It will be 2 requirement fulfilled here. 6. Then row wise 28 30 it is 2 now. 28 34 6. नाउ 6 6 दो वैल्यू सेम मिल रही है. इसमें देखेंगे तो मिनिमम कॉस्ट सेल क्या मिल रहा है 28. इसमें देखेंगे वो भी 28 मिल रहा है. फिर मैक्सिमम पॉसिबल एलोकेशन देखेंगे. यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल हो सकता है 10. हियर ऑल्सो मैक्सिमम पॉसिबल इज 10. तो दोनों जगह 10 10 है. कर देते हैं दोनों को. तो किसी भी को कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. सबसे पहले इसी को कर देंगे. तो यहाँ पे 10 यूनिट्स एलोकेट कर दी 0 0. अब जैसे अपन ने यहाँ एलोकेशन की ना रो एंड कॉलम बोथ रिक्वायरमेंट बिकम 0. वी नीड टू क्रॉस बोथ रो एज वेल एज कॉलम. नाउ सी द प्रॉब्लम हैज ओनली दिस सेल लेफ्ट आउट. सिर्फ यही सेल बचा हुआ है, बस इसी में एलोकेशन करना बचा हुआ है. 10 यूनिट्स एलोकेटेड हियर 0 0. सी दीज आर द एलोकेशंस बाय वॉगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड. ये अपने वॉगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड से आ गए हैं एलोकेशन. These are the allocations. Now see the question, what they are asking in the question. Basically, अपन का क्वेश्चन में जो पूछ रहा है वो तो देखना पड़ेगा क्या पूछ रहा है. Choose the correct options. Number of units allocated from F2 to D3. F2 से D3 है ना. D3 पे 50 यूनिट्स एलोकेट हो रही है. ये 60 बोल रहा है. तो सी द फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग है ना. फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है. दैट इज नॉट करेक्ट. यहाँ पे 50 यूनिट्स हो रही है ना F2 से D3 पे. डू रिमेंबर दिस इज D1 D2
D3 and this is D4. Then number of units allocated from F3, maybe it is S3 not, it is should be F3. Supply 3, that is factory 3, F3 to D2 is 70. F3 to D2 70, that is correct one. B is correct. The current solution is degenerate. See, if the number of allocations are less than m plus n minus 1, the solution is termed as degenerate. Now here 4 plus 4 8 minus 1 7 allocation should be required. For non-degenerate 7 required, but see 1 2 3 4 5 6 allocations are there. Of course the current solution is degenerate. Correct है ये भी. याद रखना ये degenerate की condition कब आती है? नहीं, मैंने क्लास में कई बार बताया है what is the condition for degenerate. जब कभी आपने ऐसी जगह allocation कर दिया कि simultaneously the row as well as the column required become 0. कभी आपने कहीं ऐसी जगह allocation कर दिया कि एक ही साथ रो और कॉलम दोनों की रिक्वायरमेंट 0 होगी ना, तभी ऐसा पॉसिबल है. अदरवाइज अगर सिर्फ रो या सिर्फ कॉलम होता रहेगा तो आपके नंबर ऑफ एलोकेशन हमेशा m प्लस n माइनस 1 आ जाएंगे. पर कभी आपने अगर ऐसी जगह एलोकेशन कर दिया कि साइमल्टेनियसली द रो एज वेल एज द कॉलम रिक्वायरमेंट बिकम 0, देन ओनली नंबर ऑफ एलोकेशन शुड बी लेस देन m प्लस 9 माइनस 1. और याद ध्यान दीजिए, जैसे अपन ने यहाँ 10 किया था, ध्यान दिया था आपने, ये रो भी और कॉलम दोनों साथ में स्ट्राइक आउट हो गए और इसीलिए एक एलोकेशन कम हो गया और करंट सॉल्यूशन जो है वो डिजेनरेट हो गया. लास्ट बोला करंट सॉल्यूशन इज नॉन डिजेनरेट, ये तो गलत हो जाएगा. तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर होगा बी एंड सी. तो फॉर दिस क्वेश्चन वी शुड गो फॉर बी एंड सी, दे विल बी द करेक्ट आंसर. क्लियर? तो होपफुली क्लियर टू एवरीवन. दैट वाज अ क्वेश्चन फ्रॉम आवर ट्रांसपोर्टेशन. Then see, next question I have taken from forecasting. Normally easier topic, but they can ask question from here also. Monthly demand data for a product are given below using 2 period simple moving average. Find the forecast and based upon that select the correct option. To see, first of all, what we are going to do here, we'll make a one column for forecast and one column for error. Two period simple moving average. So see, first forecast will be for the third period. 380 plus 320, that is 700 divided by 2, 350. The next forecast will be next forecast will be average for the last 2 period. 380 plus 440. 410. The next forecast, $400 plus 440, that is 840 divided by 2, it is 420. The next forecast, 420 plus 400, 410. You see, these are the forecasts. We can get the forecast for the 4 period only. Error we can get the forecast for the अगस्त, बट उसका एरर तो मिलेगा नहीं, तो कोई मतलब नहीं निकालने का. तो सी द एरर फॉर द अप्रैल इज डिमांड माइनस फोरकास्ट है. EI इज एग्जैक्टली DI माइनस FI, डिमांड माइनस फोरकास्टेड वैल्यू. 440 माइनस 350, 90. देन 400 माइनस 410 माइनस 10, 0 एंड 70. और देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा है, MAD पूछ रहा है, बायस पूछ रहा है, ट्रैकिंग सिग्नल पूछ रहा है. तो सी फर्स्ट ऑफ ऑल विल फाइंड आउट समेशन मॉड EI. नेगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव लेंगे तो 9 प्लस 10 100, सॉरी 90 प्लस 10 100 प्लस 170. तो सी 170. तो मीन एब्सोल्यूट डिवीजन MAD विल बी इज गिवन बाय समेशन मॉड EI डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीरियड. तो सी नंबर ऑफ पीरियड में ना बच्चे बड़ी गलती करते हैं. याद रखिए अपन यहाँ पे 4 पीरियड का एरर ले रहे हैं तो नंबर ऑफ पीरियड विल बी 4. यहाँ पे n विल बी 4 है ना. कई बार बच्चे क्या बोलते हैं, पूरा ले लेते हैं. नहीं नहीं नहीं,
जितने पीरियड के लिए आपके पास एरर है, सी वी हैव द एरर फॉर द 4 पीरियड, तो नंबर ऑफ पीरियड विल बी 4 हियर. So MAD will come out to be 170 divided by 4. How much it is? 170. 170 divided by 4. 42.5. 42.5. So C, option A is correct. Then bias. Now for bias, it should be summation EI, negative value negative, positive value positive. So see, 90 minus 10 plus 90 minus 10 will be 80, plus 70 is 150, 150, and the bias is given by summation EI divided by N. So 150 divided by 4, that will be 37.5. 37.5. To see, this is wrong. Bias is not 40. It is 37.5. Then tracking signal. निकालेंगे next tracking signal. See, tracking signal is given by, formula for the tracking signal is RSFE, that is running sum forecast error divided by mean absolute deviation. And see, this is RSFE, है ना, यही कहलाता है RSFE, summation EI जो अपन ने निकाला है 150. तो ट्रैकिंग सिग्नल आ जाएगा RSFE, that is 150 divided by mean absolute deviation अपन ने निकाल ही रखा है 42.5. So that will be 150 divided by 42.5, 3.52, 3.529. So see, of course, tracking signal is 3.52. D will be correct answer. C is wrong. So here for this question, A and D are correct answer. So that will be for our forecasting portion. So hopefully everyone understand the concept. Do remember this forecast error, that is a very important portion. Lot of questions they keep on asking from this portion. So that's hopefully that's all for GTQ industrial portion. God bless you all. Have a very good paper. Do remember one thing. No need to panic out. अगर आपसे कुछ क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, नहीं बन पा रहे हैं, या फिर लग रहा है कि टफ आ गया है, शायद नहीं बनेगा, तो लीव इट. यू शुड प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन. Don't waste out your time in unnecessary wasting out your time for those questions you are not able to handle out. So try to skip out those questions who are difficult. Almost every question have the same marks. You can proceed to the next one. पेपर बहुत लेंदी ना हो, इसलिए छूट ना जाए जल्दी जल्दी में, इसलिए कोशिश करिए अगले क्वेश्चन पे जाइए. एक टाइम एक क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा फंसने की जरूरत नहीं है. तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. गॉड ब्लेस यू ऑल. कम आउट गेट 2024 with flying colors. All the best to all of you.